Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम ईरान और जो इसराइल के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है उसी के एक और एस्पेक्ट पे बात करेंगे विच परटेन्स टू द रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सो फार एंड द फ्यूचरिस्टिक रोल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन दिस वॉर बिकॉज वी नो दैट इन रिसेंट डेज बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट स्पेकुलेशंस हैं भी और थी भी कि यूनाइटेड स्टेट्स माइट डायरेक्टली गेट इन्वॉल्व इन द वॉर और उसके हक में भी बहुत सारी दलीलें दी जाती हैं, उसके खिलाफ भी बहुत सारी दलीलें दी जाती हैं। और ये जो स्पेकुलेशन है उसमें यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ने खुद भी स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने डायरेक्ट सरेंडर की बात की है और फिर उन्होंने रिसेंटली कहा कि वो 2 वीक तक इंतजार करेंगे कि क्या यूएस को इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आज की इस एपिसोड में हम बुनियादी तौर पर 2 बड़े एस्पेक्ट पर बात करेंगे। एक एस्पेक्ट ये होगा कि करंटली और जब से ये कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट अटैक शुरू हुए हैं ईरान और इसराइल के दरमियान में, उनमें यूएस का क्या रोल रहा है, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड अदर्स। बिसाइड्स दैट जो दूसरा एस्पेक्ट होगा जिस पे ज्यादा बात होगी, दैट इज क्या यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टली इस वॉर में शामिल हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटीज यस में क्या हैं, उसकी प्रोबेबिलिटीज ऑफ नो क्या हैं। इन दोनों एस्पेक्ट के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, अगर मैं बात करूं जो करंट यूएस का रोल है इस वॉर में, ऑब्वियसली जब पहले दिन इसराइल ने हमला किया, इसराइल ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ को उन्होंने टारगेट किया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बड़ी क्लियर एक स्टेटमेंट दी दैट यूनाइटेड स्टेट्स वाज नॉट एंगेज्ड इन दिस वॉर। यूएस इसमें डायरेक्टली एंगेज नहीं है और उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया इस वॉर से। और it was a clear message that Iran should not retaliate against the US or because US is not party to it. बट हमने देखा कि कुछ दिनों के बाद, उसके बाद से जब से ईरान ने रिटेलिएट किया, तो ग्रेजुअली यूएस की तरफ से जो इंगेजमेंट है उसकी पॉसिबिलिटीज हैं, उसकी जो न्यूज़ है वो बढ़ती जा रही है। सो फार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बट अकॉर्डिंग टू मल्टीपल रिपोर्ट्स और मल्टीपल स्कॉलर्स, जो डिफरेंट किस्म की यूएस सपोर्ट अभी तक इसराइल को हासिल है, दैट इंक्लूड्स पॉलिटिकल वन, बिकॉज हमने देखा कि जो डिप्लोमेटिकली इसराइल की वॉर है उसको यूएस एंडोर्स कर रहा है, सेल्फ डिफेंस का नाम दे रहा है। और जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस है, उसके अंदर भी हमने देखा कि उन्होंने इसराइल को डिफेंड किया, सपोर्ट किया इस वॉर के हवाले से। बट मोर इंपॉर्टेंट सपोर्ट दैट यूएस गेव टू इसराइल वाज द मिलिट्री। और मिलिट्री में 2 तरह की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, दैट इज द वेपन्स दैट इसराइल इज यूजिंग अगेंस्ट ईरान, खासकर जो F-35 हैं, वो अमेरिकन प्रोवाइडेड वेपन्स हैं जिनको इसराइल यूज करा है। बहुत सारे मिसाइल जो इसराइल यूज करा है, दे आर अमेरिकन मेड मिसाइल्स जो कि इसराइली यूज कर रहे हैं अगेंस्ट द ईरानियंस। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफेंस सिस्टम्स। हमने देखा कि जो अमेरिकन हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द इसराइलीज विद द डिफेंस सिस्टम्स। जो इंटरसेप्टर्स हैं, बहुत सारे इंटरसेप्टर मिसाइल जो हैं वो भी, रडार्स जो हैं वो अमेरिकन के प्रोवाइड किए हुए हैं, ऑल्दो कुछ इसराइली खुद भी हैं। आयरन डोम इज अ मिक्स ऑफ बोथ अमेरिकन एंड इसराइल, तो वो भी सपोर्ट हासिल है। बिसाइड्स दैट जो यूएस एयर डिफेंसेस मौजूद हैं गल्फ में और मिडल ईस्ट में ब्रॉडली, पर्टिकुलरली जॉर्डन के अंदर, अमेरिकन आर यूजिंग टू शूट डाउन Iranian drones and missiles that are directed towards Israel. So American की ये जो 2 तरह की मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट है, that is an indirect involvement but definitely a direct involvement. तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट है वो डिफेंस ऑफ इसराइल के हक में ज्यादा है rather than the offense against the Iran. But there is another kind of US support जो कि इसराइल को अभी भी हासिल है, that is the intelligence. Obviously it's not publicly accepted by the United States, but everybody knows that जो इजरायली इंटेलिजेंस है, खासकर ईरान से हमला होने की जो इसराइल पे होता है, या ईरानियन टारगेट्स जो हैं उनकी पर्सनैलिटीज, उनके साइंटिस्ट, उनकी लोकेलिटीज, उन तमाम की जो इंटेलिजेंस है वो इसराइल के अपने पास ही मौजूद है। बट मोस्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। जो अमेरिकन सैटेलाइट डेटा है, उनकी जो पेंटागन है, उनकी जो CIA है, दैट इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ intelligence that they provide to Israel, not just for its defense but also for its offense against the Iranians. So हम कह सकते हैं नाज़रीन, in that context that United States is already
having a direct support to Israel, not just for its own defense, but also for the offense against the Iranians. But direct US attack on Iran are not taking place so far. However, in the last few days, हमने देखा कि पिछले 5-6 दिनों से, almost 1 week से, there is increasing speculation triggered by the United States President Donald Trump's statements that the United States is thinking about directly engaging Iran in an armed conflict, and the ultimate aim is to target Iran's nuclear facilities, particularly the underground facility of Fordo, जहां पे अंडरग्राउंड जो उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो अभी तक अनहार्म्ड है, बिकॉज इजराइल डज नॉट हैव द मिलिट्री कैपेबिलिटी टू डू सो क्या जो बाकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उन पे तो इजराइली टारगेट कर रहे हैं, बट इस पर्टिकुलर फैसिलिटी को टारगेट करना क्या ये इजराइल के बस की बात है? तो इजराइल डज नॉट हैव द मिलिट्री कैपेबिलिटी. द ओनली कंट्री दैट हैज द मिलिट्री कैपेबिलिटी is the United States, which has the bunker buster bombs, as well as the carriers of those bombs, that B-52 bombers. So United States is the sole country in the world that has the capability to launch attacks, underground attacks on the Iranian nuclear site. So unless the underground Iranian nuclear site is destroyed, Iran's nuclear program cannot be destroyed, which is the fundamental and the primary aim of Israel in its war with Iran, and an aim that the United States has historically and even today supports. So इस कॉन्टेक्स्ट में अब यूनाइटेड स्टेट्स की चूंकि कैपेबिलिटी है टू डू दैट, अब उसमें हमने देखा कि पिछले दिनों ट्रंप वाज गिविंग स्टेटमेंट, बट 2 दिन पहले उनकी स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा आई एम गिविंग 2 weeks टाइम, आई एम टेकिंग 2 weeks टाइम टू थिंक अबाउट इट. और उस दौरान उन्होंने कहा कि हम अब मौका देना चाह रहे हैं ईरान को टू कम टू निगोशिएटिंग टेबल, और अपना जो न्यूक्लियर इशू है उसके ऊपर बात की जाए, और हम देखेंगे कि ईरान सीरियस है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या ना हो. इस कॉन्टेक्स्ट में एक और जो स्टेटमेंट उन्होंने दी वो थी यूरोपियन जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं यूरोपियन यूनियन के और यूके और फ्रांस जर्मनी के, उनकी जो मीटिंग हुई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ कल हुई थी, उस मीटिंग को भी बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है. ऑल्दो दैट मीटिंग डिड नॉट एंड विद पर्टिकुलर कंक्लूजन, बट पॉइंट वाज दैट यूनाइटेड स्टेट्स इज क्लियरली सीइंग the developments that are taking place militarily as well as diplomatically on this issue. But let's come to this point, नाज़रीन. अब इस पॉइंट पे आते हैं कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टली मिलिटरली इन्वॉल्व हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या हैं? Obviously, in the case of this conflict, Donald Trump has all the cards with his chest, and he is the one person who will ultimately take a decision whether to directly attack Iran and Iran's nuclear sites or not. But what are the probabilities that United States might get engaged directly with Iran? US directly attack कर सकता है ईरान को. इसकी probabilities किन variables की बुनियाद पे हैं, किन factors की बुनियाद पे हैं, उसके favorable points क्या हैं, उनको अब अगर हम enlist करें तो they are multiple one of them. Let's talk one by one about all of those factors. First, at the most important reason is that United States had historically been the most vocal critic of Iran's nuclear program, and particularly Donald Trump has been very critical of Iran's nuclear program. उनका जो far right के लोग हैं, जो hawkish elements हैं, along with Israel, they have been always supportive of a direct hit on Iran's nuclear sites. और हमने कहा कि परसों ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा Iran has enough capabilities to turn it into a nuclear weapon within days and probably weeks. और इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही नेशनल जो इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट है उसकी जो हेड हैं उनकी असेसमेंट जो उन्होंने कांग्रेस में दी थी कुछ दिन पहले, उसको रिजेक्ट किया है. उनका उनको नहीं पता, आई डोंट केयर व्हाट शी सेज, व्हाट आई बिलीव इज मोर इंपॉर्टेंट. देयरफॉर यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है कि जो उसका हिस्टोरिकल गोल है टू स्ट्रिप ईरान ऑफ इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, उसके लिए दिस इज द आइडियल सिनेरियो, दिस इज द आइडियल टाइम टू हिट ईरान, बिकॉज उसकी जो अबव द सरफेस साइट्स हैं दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय इजराइल. द ओनली साइट लेफ्ट इज द अंडरग्राउंड, एंड इफ नॉट डिस्ट्रॉयड नाउ that would be considered by the Iranians as an kind of diplomatic victory, and they might expedite the nuclear activity post-war. Therefore, once in a decade opportunity is there for United States, created not by the US but by Israel. With a minimum cost, United States can achieve its objectives, which is a long-standing objective, but an objective that at least Donald Trump aspired since almost a decade. Second important factor is जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नाज़रीन वार के लिए, दैट इज द फैक्ट दैट यूनाइटेड स्टेट्स बिलीव दैट इरानियन रिटेलिएशन अगेंस्ट इजराइल इज क्रॉसिंग द रेड लाइंस. हमने देखा कि जो इरानियन मिसाइल सिस्टम्स हैं दे हैव बीन हिटिंग इजराइल विद मच मोर
destruction than it was anticipated by anybody in Israel or beyond. एंड देयरफॉर हम देखा कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में हुआ अटैक किया, इसराइली स्टॉक एक्सचेंज को हिट हुआ, कुछ उनके हॉस्पिटल्स पे हिट हुए, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हिट हुए. तो ईरानियन स्ट्राइक्स जो हैं दे आर एक्चुअली वीकनिंग इजराइल, दे आर eroding Israel's deterrence capabilities. Therefore, United States thinks that it will, before that Israel's deterrence could be further eroded, it is imperative for the US to directly get engaged and help Israel destroy Iran or destroy its major military and political capital and political, hotspots, in order to make sure that Israel wins the war and Israel's deterrence is restored in the Middle East. And this is likely to also significantly enhance US position, US influence and leverage within the Middle East. So in that context, preservation of Israel and by extension the preservation of the US hegemony necessitates US to directly get engaged in the war. Another factor that pushes Donald Trump to go to war is the hawkish elements within Trump administration, including he himself. नाज़रीन, हम जानते हैं कि जो उनके सेंटकॉम के चीफ हैं, जो डील करते हैं इस रीजन को, ही हैज बीन ऑलवेज अ वोकल सपोर्टर ऑफ डायरेक्ट स्ट्राइक्स इन ईरान. जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, ही हैज ऑलवेज बीन अ डायरेक्ट सपोर्टर ऑफ अ डायरेक्ट स्ट्राइक इन ईरान. और इसी से उनकी जो करीबी लोग हैं, हॉकिश एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं ईरान जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं और खासकर जो रिपब्लिकन्स के अंदर हैं, दे हैव बीन पुशिंग हिम फॉर सम टाइम to have a direct hit on Iran, and therefore that internal pressure by the hawkish element, the extreme far right wing के जो elements हैं, that is also a factor that pushes for the direct strikes inside Iran. Last but not the least is नाज़रीन जो Israelis और Israeli lobbies हैं, उनका जो pressure है, that is also a factor. We know that Israeli President Benjamin Netanyahu has been pushing the United States for a military strike on Iran for decades. Since 1990s, he has been pushing for this agenda, and now is the best time for the Israelis to put the last effort and convince the United States to go for this war. And therefore, Israel is using all diplomatic and political channels available to convince Donald Trump to directly get engaged and remove the Iranian nuclear threat once for all. So Israeli pressure, Israeli lobbies, जो one of the strongest lobbies हैं in United States, वो जो है एक significant pressure build कर रही हैं डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि वो एक इस तरह का स्टेप लें जिसमें ईरान को अल्टीमेटली न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से कंप्लीटली जो है वो खत्म कर दिया जाए, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी. अब नाज़रीन दूसरी फ्लिप साइड पे आते हैं. What are the probabilities that United States will not get engaged in a direct war? United States डायरेक्ट वार में ना जाए, उसको कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ट्रिगर कर सकते हैं. सो नॉट गोइंग टू वॉर फैक्टर्स कौन से हैं, उनके बारे में हम बात करें वन बाय वन. तो सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ. नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप 2000 शुरू से हमने देखा कि इवन जब व्हेन ही वाज नॉट द प्रेसिडेंट, ही वाज अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स वॉर अगेंस्ट इराक. वो इराक में वार के खिलाफ थे, वो इसको नेवर एंडिंग वॉर, इनफिनिट वॉर्स का लफ्ज़ यूज करते थे. एंड ही ऑलवेज अपोज द यूएस वॉर इन अदर लैंड्स. ही बिलीव दैट जो बाकी प्रेसिडेंट्स हैं, when they went to war in those states, that actually represented their failure to use effective diplomacy to solve the problem. So इसी कॉन्टेक्स्ट में जब ये प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने सबसे पहले जो स्पीच की थी इस दफा भी, उन्होंने कहा था यूएस विल नॉट स्टार्ट न्यू वॉर्स एंड यूएस विल डेफिनेटली एंड द एग्जिस्टिंग वॉर्स. देयरफॉर ये उनका जो पर्सनल पब्लिकली स्टेटेड एजेंडा है उसके अगेंस्ट है कि अगर वो जाते हैं. Obviously, he is not feeling the pressure that he will have to take U-turns because he has taken U-turns. But the issue is that he does not want to drag the United States to the war. Therefore, ये जो 2 weeks के टाइम की बात की थी, उसके अंदर एक यूएस की जो options that they are considering is how to get directly engaged in a war, but not drag the war and not prolong the war as such. Because short-term strikes might suit his agenda, but persistence and continuous involvement in a war, boots on ground in Iran, is something that he significantly opposed historically, and he is less likely to get engaged this time as well. तो ये जो prolonged war का threat है, जिससे वो aversion रखता रहा historically, that might be a factor that might push him away from directly engaging Iran militarily. Second factor जो नाज़रीन उनको पुश अवे कर सकता है, that is the Iranian retaliation. Obviously Iranians can have multiple options to retaliate, और दो बहुत significant retaliation के जो options हैं, one is that if US directly gets engaged, then Iran is likely to launch retaliatory strikes on the US bases in the region.
एंड देयरफॉर एंड यूएस हैज अ लॉट ऑफ बेसेस एंड प्रेजेंस इन द रीजन, चाहे वो इसराइल से लेकर जॉर्डन से लेकर नीचे यूएई तक यूनाइटेड स्टेट्स इज मिलिटरीली प्रेजेंट, इवन सीज के अंदर भी यूनाइटेड स्टेट्स मौजूद है, वहां पे पर्शियन गल्फ में मौजूद है, अरेबियन सी में मौजूद है, रेड सी में मौजूद है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो टारगेट्स बहुत ज्यादा हैं ईरान के लिए टू हिट द यूएस। तो नाज़रीन इसमें इस सेंस में अगर मैं कहूं कि इजराइल इज अ डिफिकल्ट टारगेट, बट इफ यूएस गेट्स एंगेज, यूएस इज लाइकली टू बिकम एन इजी टारगेट फॉर ईरान। तो क्या अगर ईरान यूएस की मिलिट्री बेसिस पे हमला करता है, देन यूएस विल हैव टू एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट लेडर एंड हैज टू अल्टीमेटली पुट फूट्स ऑन ग्राउंड, समथिंग दैट आई सेड अर्लियर यूएस वांट्स टू अवॉइड। सो एक ईरान की जो रिटेलिएशन है जो विच कुड ड्रैग द यूएस इन द वॉर फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, दिस इज समथिंग दैट कुड बी अ डिटरेंस अगेंस्ट द यूएस डायरेक्ट एंगेजमेंट। But there's a second Iranian retaliation that also deters US in direct engagements, and that is the Strait of Hormuz. Iran sits on the top of the Strait of Hormuz, and if Iran does not have the capability to completely block the Strait of Hormuz, it certainly has the capability to disrupt the Strait of Hormuz. It has done so through its proxies in Bab al-Mandeb, through Houthis, but it can do the same in the Strait of Hormuz. And Strait of Hormuz provides almost 1/3 of the global oil supplies. और हमने देखा कि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप बड़ा क्लियरली कह चुके हैं, he does not like to see the oil prices rising. Therefore, any threat to transportations in the Strait of Hormuz is likely to pose a significant threat to global economy, economic जो global या यूएस के allies हों या यूएस के foes हों जैसे चाइना है, it is likely to affect everybody, and oil prices are likely to skyrocket, creating another wave of global recession and potentially depression depending upon the length of the conflict, something that US cannot afford and something that US allies would not use to encourage to. So obviously ये जो दो तरह की retaliations हैं ये भी US को एक negatively affect करती हैं for its involvement in the war against Iran directly. Another factor that can deter US from directly militarily engaging Iran is the Arab states and particularly the Gulf states pressures. नाज़रीन हम जानते हैं कि जो जैसे मैंने पहले कहा कि मेजर यूएस बेसिस आर देयर इन द गल्फ स्टेट्स, और एनी डायरेक्ट वॉर विद द Iranians might provoke Iran to retaliate against the US bases in the region, particularly in those states, in the Gulf states of United Arab Emirates, चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कुवैत हो या सऊदी अरेबिया हो, उन मुल्कों में यूएस की बेसिस के ऊपर ईरान अगर रिटेलिएट करता है, दैट माइट ड्रैग अरब स्टेट्स इनटू दिस वॉर, समथिंग दैट एटलीस्ट सऊदी अरेबिया डज नॉट वांट एट एनी कॉस्ट, बिकॉज जो सऊदी अरेबियंस हैं उनका मेजर टिल्ट हो रहा है टुवर्ड्स द इकोनॉमी, द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, एंड दे आर ट्राइंग टू डेवलप अ सॉफ्ट इमेज एंड दे डू नॉट वांट टू स्काई रॉकेट ऑयल प्राइसेस। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को इफेक्ट होता है, दैट इज लाइकली टू इफेक्ट एवरीबॉडी इंक्लूडिंग द अरब स्टेट्स, एंड देयरफॉर अरब स्टेट्स आर स्ट्रांगली लॉबिंग to prevent a direct US engagement with Iran. और उसकी best example ये है नाज़रीन that Qatar is sending messages between the United States and Iran, and Qatar is United States is talking to Iran, it is engaged with Iran through Qatar, and the primary interest of Qatar and other states is to prevent the involvement of expanding this war in the region. Another factor that deters US is the potential of the failure of the United States military strikes. नाज़रीन मिलिटरली बहुत सारे जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, दे आर ऑफ द व्यू दैट यूनाइटेड स्टेट्स के पास जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं और जो उनके पास जो कैपेबिलिटीज हैं, दे विल नॉट बी यूज्ड जस्ट वंस. यूनाइटेड स्टेट्स विल नीड टू हैव अ परसिस्टेंट and consistent multiple waves of attacks on Iran to ultimately destroy the underground nuclear facilities. But this is something that is likely to be difficult, and there is no guarantee that Iran's underground nuclear facilities will be completely destroyed. So potential failure of United States military capabilities to destroy Iran's underground nuclear capabilities is one of the factors that must be in the mind of Donald Trump when he decides to directly engage Iran, whether to engage Iran or not engage Iran. Last but not the least, Nazreen, one thing is for sure that everybody, all major scholars of the world agree that any military punishment to Iran and any military attacks on Iranian nuclear sites, even if they destroy Iran's nuclear capabilities through military means, is likely to harden the Iranian resolve to ultimately acquire nuclear weapons, if not now, maybe some years ahead, maybe after a decade or 2 decades, but this is likely to significantly increase the desire as well as the necessity of Iran
to have nuclear weapons, because if Iran had nuclear weapons, शायद ईरान को आज ये दिन देखना ना पड़ता. Therefore, the United States believe that militarily dismissing Iran's and destroying Iran's nuclear program will be backfiring in the medium to long term. So to conclude, नाज़रीन हम कह सकते हैं, although there are both kind of probabilities that United States might go to war and might not go to war, but at this point of time, it seems that United States is holding its fire. It is trying to give diplomacy a chance. It wants to give Iran a second thought, but it could also mean that United States during this time is preparing to make sure that it is able to contain the conflict if it attacks Iran, and it is able to completely eliminate Iran's capabilities to retaliate against the United States, and therefore make the military operation 100% success. But in any case, Nazreen, any decision of the United States to go to war or not go to war is likely to decide the fate of millions of people in this region and the states that are part of this region, and therefore this could be, United States engagement in Iran could be a game changer, not just for the region but also for the global geopolitics and geostrategy. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.